Then ciliary body band. Then ciliary Sir, body band, right? anterior to posterior. So this is from anterior to posterior. So this is the Yes, correct sir. answer actually by the serial wise. So we'll just quickly go through this angle structures, how it will be look like through this gonioscopy. So just a minute. Yeah, so these are the angle structures from anterior to posterior. So first it will come the Swalb's line, and then the trabecular meshwork, and then scleral spur, and then this last one is ciliary body. And the trabecular meshwork has been divided into again the two parts. One is anterior trabecular meshwork, and another is posterior trabecular meshwork. Anterior trabecular meshwork is also known as non-pigmented Non-pigmented. trabecular meshwork, and the posterior trabecular meshwork is also known as pigmented trabecular meshwork, right? So now we'll go through these structures, how it will be look like. So if you will see the in this animated image, so this whitish line is denoted as a Swalb's line, and then this is the trabecular meshwork. So trabecular meshwork will be something, it will look like a pigmented type of line, or pigmented grayish line, it will be look like this trabecular meshwork. And then just after this trabecular meshwork there will be a scleral spur, and then the ciliary body band. So first we'll discuss about this Swalb's line. So Swalb's line is nothing but this is just after the corneal endothelial layer. You will be able to see this Swalb's line, the whitish band you will see while performing the gonioscopy. Okay, so this is the thin translucent line or reeds like structures. The prominent and anterior displacement of the posterior embryotoxin. So this is the another things again. So okay, fine. So these all things we'll discuss later. You know, a little bit like a structures wise we'll discuss how it will be look like the posterior embryotoxins and sample aces or lines. So with this gonioscopy. Okay. So for now, just you have to understand the Swalb's line is the first. This is the anterior most structure of the angle of anterior chamber, and this is whitish in a color. If you will perform, if you will see through this gonioscopy, then this will be look like a whitish line. So we will see in this image. Yeah. So this image is clear. So here you can see this is the Swalb's line, this whitish part, and this is your trabecular meshwork. So trabecular meshwork. So this Swalb's line is here. You can see there is some whitish band line, band like structures is visible from these structures. So this whitish line is called the Swalb's line, and the trabecular meshwork, which is also known as this non-pigmented trabecular meshwork, is also known as the anterior trabecular meshwork, because we are going from this anterior to posterior. So this is the anterior most, and this is the posterior most trabecular meshwork. So anterior trabecular meshwork will be non-pigmented, and this will be look like this. And the trabecular posterior trabecular meshwork will be pigmented, so this will be look like this grayish pattern or something like that. And just after the posterior trabecular meshwork, you will see there is a scleral spur, which is whitish band like structures, and then the ciliary body band. So ciliary body band is nothing but this is the just root of the iris. From there the iris will be originated, simply you can say. So, and this is called the corneal vase. So this line, okay. So this is the basically the corneal. So this reflection is coming from this corneal layer, and one is from this iris structure. Okay, and this edges of this reflection is called corneal vase, and from here only the angle of this anterior chamber will be visible. Okay, and depending on this color, we will differentiate like which line or which structures of the angle is visible, and depending on that we will diagnose as like whether the patient is having close angle or open angle. Okay,
And then we'll discuss about this trabecular meshwork. So how the trabecular meshwork will look like. So this is the trabecular meshwork, right? So from this structure you will be able to see. So this whitish is your scleral spar, and then just after the scleral spar you will see there is a little bit faint type of grayish structure is coming from this structure, right? So this is your anterior trabecular meshwork. Just after this pigmented layer, there is a very slightly discoloration of this pigmentation, right? So this is your anterior trabecular meshwork, and then this is the prominent pigmented line. So this is known as posterior trabecular meshwork, and this whitish band is your what is this? This whitish band. Shoulders line. This is Swalwell's line, and then this pigmented is again, this is your ciliary body band. Okay, so in the simply by seeing these angle structures you will be able to tell like how the trabecular meshwork will look like. Okay, Sir, and it sir, will retain the same. Yes, yes, Aman. सर शोल्डर्स लाइन से पहले सिलेली बॉडी बैंड आपने बोला, Sorry. आपने अभी शोल्डर्स लाइन दिखाई, उससे फिर उसके बाद आपने सिलेली बॉडी बैंड बोला. So this is your no, see, this is your, what is this one? The first layer is known as, what is this पोस्टीरियर first टू layer? एंटीरियर, From anterior to posterior. What is this? एंटीरियर टू पोस्टीरियर तो शोल्डर्स लाइन है. So this is Swalwell's line, right? And this is your trabecular meshwork, this pigmented wala. And then this white one is your Interior. scleral spar. And after this scleral spar, this is your ciliary body band. ओके सर, Okay. ओके So सर. by name itself is suggesting like anterior trabecular meshwork क्या होना चाहिए और posterior और trabecular meshwork क्या होना चाहिए. So anterior, so it has been written here like anterior trabecular meshwork is a non-functional part that is lies near the Swalwell's line, that is whitish part of this Swalwell's line. So the interior or trabecular meshwork will be just near to this Swalwell's line, and the posterior trabecular meshwork will be near to your scleral spar, right? And this posterior Yes, sir. trabecular meshwork is more pigmented than this interior trabecular meshwork. So basically we're not going to discuss about like details of this structure of this trabecular meshwork. Just we need to understand like how the uh, how, what will be the color if we will performing the gonioscopy, and how it will look like, how it will look like while performing the gonioscopy. Okay, so we will focus on that only mostly. And then the Clemens canal is something related to your what is called, this is related to your scleral spar only. Okay, and then the scleral spar is nothing but this is just attachment of longitudinal muscle of the ciliary body band. Okay, there is a two types of muscles in the ciliary body. One is longitudinal muscles and another is सिलियरी बॉडी बैंड का दो मसल्स होते हैं ना, लाइक वन इज लाइक एक लंगिट्यूडनल टाइप का रहता है, एक रेडियली टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रहता है, राइट? पढ़े हो आप लोग? किसका माइक ऑन है? Fine. So this scleral spar is just posterior to the trabecular meshwork, and it will be appears as a narrow, dense, and shiny whitish band. Okay, and the important landmark is, so this will be consistent, like the whitish shiny band will be like throughout this. So this whitish band will be 360 degree of this angle will be there. Okay, so this will be regular in a pattern, this scleral spar structure. So just we'll see once more in this angle structures. So
So now the ciliary body. So ciliary body everyone knows. So this is the ciliary body. This just root of this iris is known as the ciliary body. Okay. So from the root of this iris, the ciliary body band will start, and then the scleral spur will be there, and after the scleral spur, the trabecular meshwork, and then the Swalb's line. So if you will talk from the so while performing the gonioscopy, we will see the angle from posterior to anterior, not anterior to posterior. Okay. So depending on the posterior to anterior angle visible, we will diagnose whether the patient is having angle closer or angle open. Okay. So if you will see in this grading system, so here in the grade 4, the all structure of this angle is visible, right? Starting from ciliary body band to Swalb's line. And in grade 3, the ciliary body band is not visible in grade 3. Rest all the structures will be visible. And in grade 2, the ciliary body band and the scleral spur is will be not visible. And apart from these two structures, the all structure will be visible. And in grade 3, grade 1, the trabecular meshwork will be also not visible. Only the yeah. So in the grade 3, grade 1, the posterior, basically the posterior trabecular meshwork, till the posterior trabecular meshwork will be absent, and after the and from the only the anterior trabecular meshwork and the scleral Swalb's line will be visible in the grade 1, and in grade 0 there will be no angle structures will be visible in the grade 0. Okay. So while performing the gonioscopy, in short, if you will say, so while performing the gonioscopy, we will graded as a from posterior to anterior. Okay. So can anyone tells how we will see in this image what structures we will see in this image, this upper one? So this is your, what layer is this? सर पहले पोस्टीरियर टू इंटीरियर देखना है ना. So जो मैं माउस का कर्सिव रोटेट कर रहा हूँ, ये कौन सा लेयर है? जस्ट एक मिनट रुको. सर ऊपर वाला ना. या दिस वन, ये कौन सा लेयर है? सिलियरी बॉडी में. So no, this is not ciliary body band. Ciliary body band is this one, no? This last one. सर आपने ये कहा वाला ना जहाँ पे पोस्टीरियर टू कर्सिव है ना, इंटीरियर मेरा देखना. पॉइंटर है, दिस वन. कोई भी बताओ, ये कौन सा लेयर है? शॉल्वेज लाइन. So this is your Swalw's line basically, right? This whitish part. And just after this whitish part, there is a pigmented line, right? So in this condition, in this like images, we cannot differentiate like whether this is anterior pigmented trabecular meshwork or posterior trabecular meshwork. So we will call it, we will consider as a posterior trabecular meshwork, because the posterior trabecular meshwork will have a dense pigmentation will be there in the posterior trabecular meshwork. So this will be considered as a posterior trabecular meshwork only. So so if you want to differentiate from anterior to posterior, then you have to see in a magnified view to differentiate easily. Okay. तो इसका मैग्निफिकेशन उतना अच्छा नहीं है बोल के हम इसको सिर्फ पोस्टेरियर ट्रैबिकुलर मेसवर्क ही डिनोट करेंगे, क्योंकि ज्यादा पिगमेंटेड ही दिख रहा है. इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है. सो अगर पोस्टेरियर ट्रैबिकुलर मेसवर्क विजिबल है, तो ऑब्वियसली एंटेरियर भी विजिबल ही होगा, एंटेरियर भी होगा, क्योंकि पोस्टेरियर दिख रहा है. और जस्ट इसके बाद ये छोटा सा बहुत फाइन व्हाइटिश तो लाइन, डार्क लाइन है. व्हाइटिश लाइन, राइट? वाइट लाइन. ये नीचे वाले पिगमेंटेड पोर्शन एंड दिस पिगमेंटेड पोर्शन, इन बिटवीन देयर इज अ व्हाइटिश लाइन, राइट? सर डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन के बीच में. यस, there is a very fine whitish line, so that is your scleral spur basically. बहुत पतली है. So see, theoretically it's very easy to understand, but once you will do
gonioscopy in a live, like in a patient, no, so it will be always confused. So this will be always confusing factor to understand ki like what structures I am able to see now and whether this is this one or this is that one. और आप उस कंडीशन में दूसरे को दिखा भी नहीं सकते कि लाइक कि ये स्ट्रक्चर सच में वो है या नहीं है बोल के. सो जब तक कोई बंदा मतलब जानता नहीं होगा ये गुनियस को भी करता करने का तरीका, सो दूसरे आदमी को आप दिखा भी नहीं सकते हो. सो उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्लिनिकली जब आप करते हो तो एंगल स्ट्रक्चर्स को समझना. ओके, सो नो प्रॉब्लम, विल डिस्कस इन अनदर इमेजेस. ये सारी चीज़ हो गया है. सो लास्ट टाइम हमने ये भी सैफर्स ग्रेडिंग के बारे में भी बता रहे थे कि समथिंग while doing gonioscopy, if you are able to see all the angle structures, then that will be considered as a widely open angle, and the chances of getting closer is like almost impossible. Okay, so if the angle open is like widely open, then that will be considered as a 45 to 35% 45 to 35 degree angle width. Okay, so this is basically depending on this angle width, the classification has been given. This Safford's classification is something related to your angle width. ओके, जैसे कि एंटीरियर चैम्बर का डेप्थ होता है वैसे ही एंगल का विड्थ के ऊपर डिपेंड करके सैफर्स ग्रेडिंग दिया गया है. ओके, अगर सारे एंगल विजिबल है, सारे एंगल स्ट्रक्चर्स विजिबल है, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ 45 टू 35 डिग्री एंगल विथ. एंड अगर ग्रेड 3 है, then that will be considered. So in grade 3 what angle structures will be not visible? So the ciliary body band will be not visible, right? इस इमेजेस में अगर देखोगे तो ये ग्रेड 3 है ना, सो ग्रेड 3 में सिलियरी बॉडी बैंड नहीं दिखता है, तो वो ग्रेड 3 में आता है ना. तो ग्रेड 3 है तो उसमें क्या कंसीडर किया जाता है, 35 टू 20 डिग्री एंगल विथ है बोल के. ठीक है, सो इन दिस टू ग्रेड 4 and grade 3 the angle chances of getting angle closure is like very impossible. And in grade 2 and grade 2 the chances of getting angle closure is like there will be having possibility of getting closure angle. Okay, and if the patient is having grade 2 angle structures, so what angle structures will be missing in grade 2? Anyone? Sir, scleral spur and ciliary body band. Yeah, scleral spur and ciliary body band will be not visible in grade 2. And grade 1, what will be missing in grade 1? सर ग्रेड 1 में खाली शॉल्वेज लाइन दिखेगी और ट्रेबिकुलर Shall मेशवर्क line स्क्लेरल दिखेगी. Fine. So till the trabecular meshwork, the till the trabecular meshwork it will be not visible. Only the Swalbase line will be visible in the grade 1. So if the angle is like grade 1, then there will be having closure angle, and that will be considered as a closure angle. Glaucoma or closure angle, you can simply say. You cannot say glaucoma. You will simply say that there is a close angle for this patient. Okay, and if there is no angle structures visible, then that will be considered as a 0 grade, means complete closure angle is there. Okay, so एंगल का दो तरह का है, एक तो हमारा ये इंटीरियर चैम्बर का डेप्थ का ग्रेडिंग है, which is known as, कौन सा ग्रेडिंग बोलते हैं? Anyone? जो PACD इक्वल टू 1 CT, PACD इक्वल टू हाफ CT, ये कौन सा ग्रेडिंग है? So this Safford grading is especially related to your gonioscopy. Okay, and there is another thing that is called binary grading, right? So binary grading is related to your anterior chamber depth. Okay, so don't confuse in between two, Safford's grading and binary grading. If someone is asking like what is the difference between this Safford's grading and binary grading,
then you have to say these 2 points. Safer grading is related to your gonioscopy grading, and the binary grading will be related to your anterior chamber depth. Okay, fine. So how the peripheral anterior, if the patient is having peripheral anterior synechia, then how it will look like in the gonioscopy? So it will be look like this. So you can see this in this here, this root of this iris is like it's just covering to this trabecular meshwork or till this valgus line. Okay, so anterior synechia मतलब होता क्या है? सबसे पहले कोई ये करने बताएगा? What is synechia? What do you mean by? What do you understand by the synechia? Anyone? So what are the different types of synechia in the eyes? Anterior and posterior. Anterior synechia and posterior synechia. So what is anterior synechia? सर जब आयरिस एंड कॉर्निया के पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच हो जाती है तो जब आइरिस आपका इंडोथेलियल लेयर ऑफ कॉर्निया के साथ चिपक जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर साइनेकिया, और पोस्टीरियर साइनेकिया कब बोलेंगे? जब लेंस से चिपक जाएगा आइरिस, जो लेंस से चिपक जाता है तब। ठीक है, सो नाम से ही पता चल रहा है कि दिस इज पेरीफेरल इंटीरियर साइनेकिया, मतलब पेरीफेरी में साइनेकिया हो रहा है। सो पेरीफेरी में साइनेकिया हो रहा है तो देयर विल बी चांसेस ऑफ हैविंग गेटिंग साइनेकिया इन द एंगल आल्सो, राइट? तो इसीलिए हमें पेरिफेरल इंटीरियर साइनेकिया में गोनियोस्कोपी का जरूरत पड़ता है, ये देखने के लिए कि एंगल में भी तो साइनेकिया नहीं है बोल के। सो अगर गोनियोस्कोपी कर रहे हैं और उस समय में हमें पता चलता है कि इस तरह का अगर आइरिस का कंटिन्यूएशन लाइक 12 लाइन की तरफ तक जा रहा है और उस डायरेक्शन में कोई भी विजिबिलिटी नहीं है एंगल स्ट्रक्चर्स का, देन वी विल कॉल इट एज अ पेरिफेरल एंगल साइनेकिया इज आल्सो देयर। ओके, एंगल साइनेकिया इज आल्सो देयर। Okay, understood this one? तो पेरिफेरल इंटीरियर साइनेकिया में क्यों गोनियोस्कोपी का जरूरत रहता है? तो बेसिकली ये देखने के लिए कि पेरिफेरल इंटीरियर साइनेकिया के वजह से एंगल में तो साइनेकिया नहीं हो रहा है, एंगल तो क्लोज नहीं हो रहा है। अगर एंगल क्लोज होगा तो क्या होगा? क्या हो सकता है? इफ द एंगल विल गेट क्लोज, एंगल में साइनेकिया होगा तो एंगल का क्लोज होगा ना उसमें, तो एंगल अगर क्लोज होगा तो फिर क्या होगा? तो जितना भी एक्वस फॉर्मेशन हो रहा है उसका आउटफ्लो में आउटफ्लो नहीं हो ऑब्स्ट्रक्शन पाएगा। होगा। तो अगर आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो फिर प्रेशर हाई होगा, पेशेंट का प्रेशर हाई होगा तो फिर वही ऑप्टिक डिस्क डैमेज करेगी। जब ऑप्टिक डिस्क डैमेज होगा तो पेशेंट का विजन लॉस होगा, राइट? एंड दैट विल बी रिलेटेड टू योर ग्लोकोमा, ग्लोकोमा विल बी देयर, राइट? So that is mainly related to glaucoma. Fine. So what is angle recessions? I have told you all in the last slide, last classes, what is angle recession and when we will call it as an angle recession. So basically आप लोग सुने होंगे कि जब भी चोट लगता है कोई भी पेशेंट को, if the patient is having any history of blunt trauma, there will be two types of trauma. One is open close open one is blunt trauma related and one is open and one is closed trauma, right? तो अगर किसी भी पेशेंट को ब्लॉन्ड ट्रॉमा रिलेटेड थिंग है, लाइक चोट लगा है लेकिन कोई टीयर नहीं हुआ है आंख में, तो उस कंडीशन में हमें गोनियोस्कोपी करने का जरूरत होता है। क्यों? अगर पेशेंट का कोर्निया में टीयर हो गया, फट गया, तो उस समय में तो गोनियोस्कोपी करना ही नहीं है क्योंकि उस समय में तो टाँके वगैरह लगेगा, कोर्नियल टीयर रिपेयर होगा, है ना? तो कोई भी परफोरेटेड केसेस में हम लोग को गोनियोस्कोपी नहीं करना रहता है। लेकिन अगर सिंपल सा छोटा सा चोट लग गया और टीयर वगैरह नहीं हुआ है, बस हाइफेमा वगैरह है,
तो उस कंडीशन में हमें क्यों गोनियोस्कोपी करने का जरूरत रहता है? टू सी द एंगल रिसेशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंगल रिसेशन? So angle recession matlab just you have to understand there will be having tear in the ciliary body band. Okay, so जो tear ciliary body band होता है उसमें उस लेयर का बेसिकली फट जाना को बोलते हैं हम लोग एंगल रिसेशन. दो पार्ट में अगर बट गया है, टुकड़ा हो गया है, मीन्स दैट विल बी कॉल्ड इट एज एंगल रिसेशन. तो एंगल रिसेशन को बेसिकली देखने के लिए हम लोग ब्लंट ट्रॉमा केसेस में गोनियोस्कोपी करने का जरूरत रहता है. ओके, सो how we will see this angle recessions. So always we have to compare with the normal eye. So while doing gonioscopy, first you have to perform in the normal eye, and then you have to perform in the abnormal eye, or the eye जिस आंख में चोट लग गया है पेशेंट को उस आंख में करना है. पहले नॉर्मल आई, देन द अफेक्टेड आई. ओके, क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे कि नॉर्मल आई में जिस तरह के स्ट्रक्चर्स है सेम स्ट्रक्चर्स अदर आई में भी मिलने का चांसेस रहता है. तो कभी कभी हमें कंफ्यूजिंग ये लग जाता है कि इस आंख में भी टीयर है और इस आंख में भी टीयर है. तो ऐसा नहीं है. अगर नॉर्मल आई में भी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर्स कुछ एंगल रिसेशन टाइप का भी लग रहा है, सो दैट विल बी नॉट रिलेटेड टू योर ब्लंट ट्रॉमा. ओके, दैट इज द नॉर्मल एंगल स्ट्रक्चर्स फॉर दोज पेशेंट. Okay, that's why it's very important to perform first in the normal eye and then the affected eye. Understood what is this angle recession, the meaning of this angle recessions, and why it will be performed in case of angle recessions? So simply angle recession मतलब यही है कि there will be having tear in the ciliary body band, और ciliary body band फट जाना, दो पार्ट में बट जाना को बोलते हैं हम लोग एंगल रिसेशन. और एंगल रिसेशन ये तभी पॉसिबल है जब पेशेंट को ब्लंट ट्रॉमा हो, जैसे क्रिकेट बॉल से चोट लग जाना या किसी के हाथ से जोर से चोट लग जाना. तो उस कंडीशन में ये जरूरी होता है. So this is related to advanced topic. Fine. So in short, you should know this one also. Cyclodialysis cleft. So what is cyclodialysis cleft? So there will be having something whitish. So just you have to understand कि like जैसे क्या बोलते हैं उसको, सीस्ट हो जाता है ना, पता है ना सीस्ट किसको बोलते हैं? जैसे कंजक्टिवा में सीस्ट हो गया, आईलिड में सीस्ट हो गया, ऐसे ही. बस इसका मतलब इतना समझ के रखो कि एंगल में कुछ सीस्ट हो जाना जो कि व्हाइटिश कलर का बेसिकली होता है. तो व्हाइटिश कलर का कोई भी चीज हो रहा है एंगल में इस तरह से बैन, तो दिस पार्ट यू कैन सी. तो दिस इज योर साइक्लोडायलिसिस क्लेफ्ट. ओके, so if you are seeing anything similar to these structures, then that will be called it as a cyclodialysis cleft. So this is actually very vast topic. So in simply you can understand by seeing this picture. Okay, so in case of this cyclodialysis cleft, you will find this decreased IOP will be there. Okay, and the angle structures, angle means this deep angle is something related to your anterior chamber depth. So anterior chamber depth will be deep, the anterior chamber depth will be not narrow. Okay, and the IOP will be also decreased if there will be presence of the cyclodialysis cleft. Okay, and by the structures it will be look like a whitish color like this. Again the sample AC line. So sample AC line is something related to this line. So this one here you can see, by seeing these structures only you will be able to understand कि this is the something abnormality is there in the angle, right? क्योंकि यूजुअली स्ट्रक्चर्स ऐसा नहीं होता है हमारा. यूजुअली क्या होता है, पहले हमारा सॉल्वेज लाइन होता था, फिर एक बैंड, मोटा सा बैंड होता था जिसको हम लोग ट्रैबिकुलर मेसवर्क बोलते थे. और ट्रैबिकुलर मेसवर्क में ही दो तरह का पार्ट था, एक एंटीरियर ट्रैबिकुलर मेसवर्क व्हिच इज नॉन पिगमेंटेड ट्रैबिकुलर मेसवर्क, एंड अनदर इज पोस्टीरियर ट्रैबिकुलर मेसवर्क व्हिच इज पिगमेंटेड व्हाइट ग्रेज बैंड, थिक बैंड like structures. And then there was having something
whitish fine line that is known as scleral spur, and after that there was having ciliary body band. लेकिन ये sample line में क्या है? So there is a discontinuation of this pigmented line will be there just anterior to this trabecular meshwork, but this is not a continuous part. Okay, here you can see this is mixing with this trabecular meshwork, right? And here also it is mixing with this trabecular meshwork. Okay, so how we will differentiate from this trabecular meshwork to this sample AC line? So this sample AC line is something related to your discontinuation, but this trabecular meshwork will be continuous process will be there in 360 degree. Okay, so अगर theory में पढ़े तो इसमें क्या लिखा हुआ है? So line of irregular pigmentation deposit anterior to the Schwalbe's line. Okay. And then the sample AC line can be mistaken from the trabecular. Okay, this is fine. Appearance sample AC line, solid paper, dark, granular, discontinuous pigmentation, fine. So in the theory also is suggesting the same. So this is sample AC line is just anterior to this. So this is anterior to this Schwalbe's line का भी anteriorly ये place रहता है sample AC line. मैं गलत बता रहा था. ये ट्रेबिकुलर मेसोर का इंटीरियर ही रहता है, बट ये क्या होता है कि ट्वेल्वेज लाइन का भी पहले ये दिखता है. ओके, उसके बाद में सॉल्वेज लाइन दिख रहा है यहाँ पे दिस वाइटिश बैंड, एंड उसके बाद में ये दिस योर ट्रेबिकुलर मेसोर. तो ये कुछ इस तरह के लाइन दिखेगा. तो बस नाम जान के रखो आप लोग अभी के लिए, अदरवाइज सैंपल एसी लाइन का ही अलग एक चैप्टर है. सो नियोवैस्कुलराइजेशन ऑफ द एंगल. So if you are getting neovascularization in the iris, then in those type of condition also you will require to perform this gonioscopy. So how it will be look like in the angle? This neovascularization, how it will be look like in the angle is like this. So here you can see this neovascularization continuation will be in the angle also. Okay, so अगर angle में भी आ रहा है means that is abnormal. Trabecular meshwork pigmentation will be also required to record in the EMR file, because depending on the trabecular meshwork, like there is a grading of this trabecular meshwork pigmentation. So like grade 1, 2, 3, 4. Okay, and depending on that grade, if pigmentation is more, trabecular meshwork pigmentation is more, then that will be considered as abnormalities. Okay, so so that can be related to, there is a something known as like pigmented dispersion syndrome. So अगर trabecular meshwork का pigmentation ज़्यादा हो रहा है, then that will be suspected as a pigmented dispersion syndrome type का कुछ ये किया जाता है, और मतलब like suspect किया जाता है कि that can be pigmented dispersion syndrome related patient, and the angle structure is abnormal because of this only, and also in pigmented dispersion syndrome the patient IOP will be high. Okay, and another thing is this pseudo exfoliation syndrome. So this is again, this is very vast for you all guys. जो PXF लिखते हैं ना, PXF अभी नहीं आएगा, थर्ड ईयर में आएगा. फाइन, सो आई एम स्कीपिंग दिस वन. पिगमेंटेड डिस्टेंस. तो एक चीज और मैं दिखाता हूँ.